Hey YouTube, so in this video I'll teach you how to make this loading effect in Filmora 9. So please subscribe to my channel and follow me on Instagram. The link is in the description below. We'll start by adding the text. कोई भी text, random text select लीजिए. I'll choose this one. Double click on it. Go to advanced. हमें इस text की ज़रूरत नहीं है. We double click on it and delete the text. Now click on this icon और ये box हम सेलेक्ट करते हैं. ये बॉक्स की सबसे पहले हमने ओपेसिटी हटानी है, तो ये रहा शेप फिल्स, इसको वाइट करके ओपेसिटी 0 और साइज थोड़ा बड़ा. और टेक्स्ट बॉर्डर का हमें साइज कर देना है 4 और शेप बॉर्डर हमने कर देना है 5. और ये येलो आइकन पे क्लिक करिए, इसको ड्रैग कर दो ताकि सीधा हो जाए. ये आपका बॉक्स बन गया. अब एक ऐड करना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट होना चाहिए ब्रॉडवे. यहाँ पर type as many eyes as you can. और इन आइज का साइज बढ़ा सकते हैं. Now we'll align the box according to the eyes. That's it. Go to animations. Type animation. We'll extend the time duration of the animation. और अगर हमें नीचे लोडिंग टेक्स्ट भी चाहिए तो एक क्लिक ऑन ऐड टेक्स्ट, reduce the size to 32. The same for your so your font of choose to do draw option by maybe this one. No, this one. Right. Loading. And to animation we'll select fade 2. To bring a reappearing effect, we'll add another text, place it over and type loading again. Let the same animation there. That's it. Now you can see, and there you go.